Namaskar. Welcome to Ek Samvaad at Ankuran. Sarve Bhavantu Sukhinaha. This is a sub-series of talks on Ek Samvaad about psychology in practice. Today we are in conversation with Dr. Vidhu Mohan about the role of psychology in everyday life. Dr. Vidhu Mohan is a professor of psychology at Panjab University. She's retired, but it's not really fair to call her retired because she's working with the same amount of gusto. She's a researcher, counselor, trainer, behavioral science consultant, and my teacher. So, ma'am, I'm so honored that you accepted the invitation and came to Ek Samvaad at Ankuran. Thank you so much for being here. Thank you. Thank you. A word about Arunim Ankuran. This is an initiative for positive social change through self-development. The goal being greater well-being and happiness for all. At Arunim Ankuran, we believe each person is unique and special in some way, and we celebrate that difference. So, psychology is the scientific study of the mind and behavior. As a student of psychology, I have often wished that researchers and academicians could share inputs from their work and experience to help those outside the classroom or laboratory. So, this section of Ek Samvaad is an effort to share valuable ideas from various branches of psychology that could help and make a positive difference in the everyday lives of people. So, ma'am, thank you so much for becoming a part of this journey. Dr. Vidhu Mohan is a leading psychologist of India. She's won so many awards. Her accomplishments are so many. It's very difficult to condense them. But let me try to introduce her. She has won the Lifetime Achievement Award for Psychology. Her biography is there in a book, Panchkula Ke Prakash Stambh, a book on 10 celebrities of Panchkula, which was released by the governor of Haryana. She has been the university gold medalist in psychology, and she has been a professor for more than 40 years, member PG and UG Board of Studies, expert for UPSC, consultant for behavioral sciences, founder behavioral science trainer for ITBP and CRPF, trainer in Commonwealth Asia Pacific Center, expert in the Ministry of Social Welfare, trainer of self-growth skills, nationally and internationally. Warm welcome to you, ma'am. For me, it is such a great pleasure to be back with ma'am, and it's almost more than 2 decades that I was in her class. So, ma'am, first of all, you are one of the most amazing psychologists this country has. So, what was the motivation for you to choose this field? Okay, it's a very long history then. When I started psychology, um, I had studied in Sacred Heart LLB and then St. Bede's, Simla. And then Chandigarh had just started, and the university had shifted from Solan to Chandigarh, and Dr. A.C. Joshi was the vice chancellor. They had philosophy, but no psychology. And I insisted, and my father was a government officer and very well connected with the university's syndics, like Justice Nation Mahajan. I said, I want psychology. So Justice Mahajan said, बेटे philosophy करो नहीं मुझे तो psychology ही करनी है. And nice, he was a very senior syndic senator and very powerful. He said, अच्छा भाई मेरे father का नाम से मैं खोल देते हैं psychology. So that was how the psychology started, and we were put in hostel number 1 boys, one little room, and steel chairs to sit on. But psychology was lovable. What does psychology mean? Psychology is psycho-logos, talk of the mind. Where is mind? Mind is in our behavior. And so it's the science of behavior. Well, how many people know about behavior or what they are? Hardly any. In no school, in the primary class or in the middle school or in the high school, any syllabus or any co-curricular activity is there. Know yourself. So, and yeah, I'm so happy to share with you. Then you remember you used to be in the class where I had to do a lot of practicals. And who am I? You did. You remember? Yes, ma'am. Now that why is a transformation. It can be stretched to such a large thing.
Commonwealth, you had mentioned, no? In Hmm. Commonwealth, I was the pioneer for psychology in the sense that I told them if you really want to bring about changes in all your delegates from different Commonwealth countries, UK, Australia, Canada, Malaysia, Singapore, all countries are there, and they have different cultures and different backgrounds. I'll do a program, personality development. So after that, they started calling me PDP ma'am, personality development. For 4 months, I did the training every Saturday, every Saturday, every Saturday. And once they finished and they went back to their own countries, the ambassadors to their own countries, there was no looking back. Some of the Indian participants, like late Dr. Khan, Hmm. uh, he was also one of the participants. And I said, I'm an Indian and I want my Indian to be in the West. So he retired from Panjab University as Director Youth Welfare. In other countries also, in Bangladesh, Mr. Aslam is at the top of the education. In the UK, Jeff Fraser became the top of in youth development programs. So, if your personality is completely developed, you can bring about real changes. And I think we in India really need it. And Yes. especially right from the school, if we have that, we grow people who know who they are and who others are and how to relate to them. Hmm. So that is what brought me to psychology. And then I kept on discovering that psychology is not just theoretical. Of course, there are practicals and there's scientific knowledge, but there's a lot of practical to do. And you remember in counseling class, I said, let's start with ourselves. We Hmm. can do counseling only if we know ourselves and know our own weaknesses or strengths and how to cope with other people and have empathetic listening with them. So, lots of exercises there. That prompted me to work with the police organization in 1977. मुझे हर चीज के साथ था सिलेक्शन के साथ ट्रेनिंग के साथ so psychology came into policing. Okay, then UPSC, and then HIPAA, Haryana Institute of Public Administration, and they started. Maybe my reputation had gone around, and they hired for me, and they said Mr. Oja, B.S. Oja was there as the chief secretary, and a very powerful chief secretary. So he said, आपको हम चाहते हैं कि आप बिहेवियर साइंस हमारा शुरू करो HIPAA का. हाँ, शुरू करेंगे किया. So after that, the programs were so remarkable one after another. They helped me also, but I did one program. I'm just giving you one example. Electricity of Haryana was terrible at that time. Hmm. कोई सुनता नहीं था, कोई कुछ नहीं था, कुंडी लगा के मार लेते थे, one thing like that. I said to the engineer in chief at the top, I said I would like to do a vertical program. You from your SDO till you there. I did that program. उसके बाद हरियाणा विद्युत 3 भागों में बटी and now हरियाणा विद्युत is really commendable. तो फिर सबसे वहां से शुरू करा. So then I said that it can bring about change anywhere. फिर Yes. हरियाणा मेडिकल facilities in government level पे they came to know of me and because I was at HIPAA, they said आप हमारे डॉक्टर को पढ़ाओगे. हम पढ़ाएंगे, क्यों पढ़ाएंगे. But I would like to teach doctor how to be a good counselor. Because medicine does nothing till the patient has a faith in you. Otherwise, I know patients फ्री मेडिसिन जो लेके जाते हैं तो जाके अपनी चलंची में फेंक देते हैं. कहते हैं हमने भी तो जिंदा रहना है, डॉक्टर ने भी जिंदा रहना है, चलो ले लेते हैं. Then when I did 3 hours training program and all those groups, I must have taught at least more than 1,000 doctors of Haryana. Hmm. So changes started coming. The changes started coming. And that was the ones who had done the program. Yes. और मन का विज्ञान, मनोविज्ञान, मन का विज्ञान. मन को जानो, मन के जीते जीता है, मन के हारे हार. तो फिर आप जीते जीतो. And Pragya, you are one of the examples. You're sitting over here and doing this thing. Very good. Oh, ma'am, this is, Yes, yeah. have to bring psychology to the doorstep of everybody. But this was the beginning, and then I kept on things added. Social welfare, banks, state bank, Punjab National Bank, all I did, I don't know, thousands of them. LIC, क्या क्या नाम उनकी कराऊं, and industry. अब
last program that I did for industry, that was really very creditable. They came to me, एक Dutch बनाने वाली company थी. They said that we are not very satisfied with the production or the performance of the people. I said, तो आप क्या चाहते हो? आप उनको lecture दे दो. मैंने कहा, can you just leave it on me and let me work out the program? I said, I'll do training programs, understanding yourself and your work. And then this would be twice a week, twice a week, twice a week. For 2 months, I did that program. The first day when I went there, you should have seen, everybody was sitting like this. Finance on one side, market on one side, advertising on the other side, production on the other side, procurement on the other side. और किसी से बात नहीं कर रहा. Tea time, हम अपने अपने ग्रुप में खड़े हैं बात कर. Then I started. So I could now know what they really want. But अगर फाइनेंस वाला परफॉर्मेंस से और प्रोक्योरमेंट से बात नहीं करेगा तो प्रोक्योरमेंट वाला रोता रहेगा सारा. Then I started mixing the goals, putting them together in exercise and all. By third week, उनकी जो थी ना मैनेजर पर्सनल वाली आई और टी ब्रेक में ना कम एंड हैव टी विद अस. टी ब्रेक में देखा शोर मचा है, चो हो रही है. नो, दे वर वेरी एक्साइटेड. फाइनेंस वाला उससे बात कर रहा है, परफॉर्मेंस वाला किसी और से कर रहा है, प्रोक्योरमेंट किसी और से कर रहा है, सब ऐसे, एडवर्टाइजिंग किसी और से कर रहा है, सब ऐसी बातें हो रही है. और जब 1 महीना बीत गया तो देवर इकट्ठे बैठ रहे हैं, फाइनेंस का परफॉर्मेंस, गवर्नमेंट, ये वो सब चीज इकट्ठे लोग बैठ रहे हैं. एंड लॉट्स ऑफ एनर्जी बीइंग रिलीज ओवर देयर. 2 महीने कराने के बाद मैंने कहा, देखिए मुझे दवाइयां बनाना नहीं आता, दवाइयां आप बनाओगे, लेकिन दवाई बनाने के लिए आपकी टीम ऐसे होनी चाहिए. हाँ मैम, टीम ऐसे रखेंगे. एंड देन आई सेड मैनेजर, 6 महीने बाद मुझे आपकी परफॉर्मेंस ग्राफ चाहिए. जब मैंने शुरू किया और 6 महीने बाद माय गॉड, तो सच अ प्लेजर. यहाँ से ग्राफ यहाँ गया है 6 महीने में. मुझे तो दवाई बनाना तो आता नहीं था, बट इट कैन टच द सॉफ्ट स्किल्स, द ह्यूमन रिलेशंस. तो बहुत अच्छी चीज रहेगी. तो ये चीज है. तो मेरे जो स्टूडेंट थे पीएचडी जिन्होंने करी, आई सेड साइकोलॉजी इज अ मिशन. लोग करो जिससे तुम लोगों का भला कर सकते हो. आई एम गिविंग यू फ्यू एग्जांपल्स ऑफ पीपल. आई एम अ वुमन myself, and I know that once a month phenomena, everybody goes through that. And there are women who have very high PMT, post menstrual cycle के अंदर and cycle के अंदर, then pre-menstrual में. Cycle ऐसी होती है कि that 1 week that passes, they are absolutely in doldrums. फिर एक को PhD कराई, उनका I have developed a model for relaxation. तो इनका कराओगी सारा जो हाई PMT आई है, रिलैक्सेशन कराओगी एंड काउंसलिंग करोगी, और फिर इनका देखोगी 6 महीने बाद की व्हाट इज देयर आउटपुट नाउ. वो सारा कुछ हुआ. वो 6 महीने बाद तो इतनी खुश हुई. रिलैक्सेशन के बाद मैंने रोना बंद कर दिया, चिड़चिड़ करना बंद कर दिया, एंड थिंग्स चेंज अ लॉट. मैं कभी भी चेंज काफी नहीं है. इट्स अ होलिस्टिक प्रोग्राम. फिर मैंने एक एमएससी होम साइंस वाली आई, तो न्यूट्रिशन की थी. मैंने कहा, देख भाई, न्यूट्रिशन के बिना काउंसलिंग नहीं हो सकती. तो फिर न्यूट्रिशन सारी बनाई हमने, और काउंसलिंग का तो प्रोग्राम मेरा था ही बना हुआ. तो उनको सारों को बताया कि तुम प्री मेंस्ट्रुअल डेज में ये खाना खाओ. तो खाती क्या थी, हमने कहा वो देखा चॉकलेट, मिठाई, समोसे, तो वो सब बंद हो जाएंगे. बिकॉज दे आर द वन व्हिच आर एग्रीवेटिंग योर एंजाइटी सिंड्रोम. वो बंद करके हमने जो बनाई थी पैक, उसमें चीकू भी था. तो चीकू इज वेरी गुड फॉर प्री-मेंस्ट्रुअल डे. और आपको वैसे भी चाय कम, चाय की जगह आप ग्रीन टी पी लो, सोया मिल्क पी लो, ऐसे. और 3 घंटे बाद थोड़ा 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 खाते जाओ. वो करने की और रिलैक्सेशन करने से वो तो इतना फर्क पड़ गया कि 6 महीने के बाद में साहब नाउ इट्स फिनिश्ड एंड यू कहते नहीं मैडम प्लीज नहीं छोड़ के जाओ. फिर वैसे नहीं, अब आप पैसे नहीं होंगे, आपको हमने सिखा दिया है, now you practice it. Then this took me to another field. So I said, what would be the reaction of their family जब हाई पीएमटी होता है. तो हाई पीएमटी women भी, लो पीएमटी women भी, और उनके एडोलेसेंट बच्चे भी
How do you perceive your parenting of your mother? तो हाई पी हमारी माँ चाचा चाचा करती रहती है, शुद्ध में चाचा चाचा करती रहती है, और लोग इनकी तो ठीक ठीक है, ठीक ठीक है, मतलब ज्यादा अच्छी नहीं है, ठीक ठीक है। फिर ये उनको कराया, उनकी पीएमटी मैनेजेबल होगी, वो सारा पहुंचेगा। देन आई टॉक टू द हस्बैंड, यू रियलाइज दैट एवरी मंथ her hormonal cycle is changing and she is feeling all this. You have to be a little considerate to her, a little more affection to her. Keep her a little happy and you'll see the change. कहते हाँ बड़ा लड़ती है, उन दिनों बहुत लड़ती है, मैंने कहा लड़ना बंद हो जाएगा अगर आप उनका ध्यान रखोगे। That change took place. And then the children of high PMT women said, नहीं हमारी माँ तो बहुत अच्छी हो गई है, आपने क्या कौन सी दवाई खिलाई, बहुत अच्छी हो गई है। मैंने कहा वो दवाई खाती नहीं तो तुम उनको अच्छा करते हैं। You can see that people used to tell me, because I started hardcore experimental psychology, and my guide was Professor N.K. Gake. He had done everything from America. And मेरा पहला पेपर बाहर छपा, मतलब नए नए स्टूडेंट का बाहर छपना बहुत मुश्किल है, नॉलेज ऑफ रिजल्ट्स पे। He said, you are doing PhD with me, लगा के इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह सब बना लिए थे। Unfortunately he left, but he left that input in me कि मैंने रिसर्च करनी एक्सपेरिमेंटल साइकोलॉजी के साथ, वो मैंने करी। But then a transition point came that in 74 I went for an international conference on humanistic psychology. There they said that during daytime we'll have paper, scientific paper, in the evening we'll do workshops. And there was an American lady, I'm forgetting her name. She said, I'll do certain things with you and see which one of you can really be a good psychologist. So what she did was she just talked to us and she put us in a frame of mind that we can sort of concentrate for ourselves. And then the actual exercise was, she said, you close your eyes and choose a partner, a person whom you don't know. So I chose somebody from Tamil Nadu. तो मद्रास कहते थे ना, सामने आ गया वही आ गया मेरे। You can now close your eyes, take an object of this person and concentrate and see the image. You could 10 times you will do this, see the image and tell the image to your partner and verify. Is that true? मैं करके आने थे ये तो एक startling moment. मेरे I was boy होता ना जैसे of all the stalwart of psychologists, विदु हमारा नाम बनाई, experimental psychology करेगी, हाँ कर रही थी experimental psychology। फिर पहला दिन आंख बंद करके उसने मुझे पता नहीं रुपया दिया, अपनी घड़ी दी थी, घड़ी दी, फिर मैंने कॉन्सेंट्रेट की आंखें बंद करके ऐसे, और इमेज पता क्या आई कि पोर्टिको है, पोर्टिको के स्टेप्स हैं, एक औरत खड़ी है, वो ऑरेंज बाल लगाते हैं, वो ऑरेंज गजरा लगाते हैं, वो निकल रही है, यस शी इज माय वाइफ। तो सुन के हैरान हो गई, अच्छा एक टैली हो गई, फिर दूसरी टैली ऐसी मुझे लगा कि उसके पास कोई काले रंग की वॉक्सवैगन टाइप की गाड़ी है, ब्रिटिश होता ना वॉक्सवैगन गाड़ी। तो मैं कहा इसको देख के मुझे लगा था ये साइकिल चला कुछ नहीं चलाता होगा, मैं कॉग्निटिव सेल्फ होते ही साइकिल चलाता होगा, बंद करा, फिर गाड़ी आ गई। मैंने कहा देयर इज अ ब्लैक कार विद अ राउंड this thing good and you are getting out of it. He says yes, that's my car, I go for work on that car. दूसरा ऐसे करते करते क्लाइमेक्स हुआ जब मैंने देखा एक से गलत हुआ, नॉट ठीक हुए, आंखें बंद करके देखा तो देखा कि तिरुपति के बालाजी हैं और दूसरी तरफ जीसस क्राइस्ट है। मैं कहा पे ये मुझे मारेगा, तो मैंने कह दिया बालाजी नहीं और जीसस क्राइस्ट भी है। फिर मैंने देखा, मैं कहा डू यू हैव अ पोर्ट्रेट ऑफ बालाजी तिरुपति? यस यस यस। मैंने कहा दिस इज अनदर पोर्ट्रेट, तो यस देयर इज अनदर पोर्ट्रेट। सीरियस हो गया, मैंने कहा दिस इज जीसस क्राइस्ट? यस, हाउ डू यू नो? मैंने कहा दिस इज द विजन आई एम सीइंग। फिर उस दैट अमेरिकन लेडी एक्सपर्ट शी सेड where are you knocking around? You will do absolutely wonders if you become a counselor. God has given you that quality of empathetic understanding of people, and you will see people and you will realize what is happening, and you will be able to help people. That was my friend. That is how I started counseling in my department. Wonderful. 74 के बाद खुली थी।
एंड देन यू आर नाइस स्टूडेंट्स और वो इतना अच्छा लगता है, और उन स्टूडेंट ने बहुत अच्छी काम की है। किसी ने डिसलेक्सिया पे करा, किसी ने डिसेबल्ड बच्चों के लिए नीलू खेड़ी में खोल दिया, पूरा संस्था खोल दी। मतलब ऐसे ऐसे चीजें करी मेरे स्टूडेंट ने, हम प्राउड ऑफ दैम। ये बहुत मतलब साइकोलॉजी को वो भी आगे लेके चले। अब लेटेस्ट एक मेरी सुबह का फोन आया, सुबह पीएचडी मेरे साथ की थी, मैंने कहा कि एंड शी स्टार्टेड, क्या करूं, रिटायरमेंट, वो भी रिटायर हो गई थी। मैंने कहा यू स्टार्ट समथिंग अबाउट साइकोलॉजी व्हिच विल हेल्प पीपल। तो उसने बच्चों के लिए लिखना शुरू करा, how to remove your stress during examination, how to improve your study habits, हिंदी में लिखना, क्योंकि हरियाणा में हिंदी चलती है। मैंने कहा स्वतंत्र, यू मस्ट राइट अ बुक। मैं टीचर तुमने लिख दिया है, लिखो, किताब लिखो। आज हो रहा है मैम, आप बहुत खुश हो गए। मैंने कहा बता क्या किया, कहती मैंने बुक लिख लिया और मैं चाहती हूँ आपसे कुछ। मैंने कहा क्या चाहती है बता, कहती आप मेरा फॉरवर्ड लिख दोगे। मैं कहा क्यों नहीं लिखोगी, वो तो मुझे हफ्ता दिया, मुझे फॉरवर्ड लिखना है उसका, और वो है रिलेशनशिप, बिल्डिंग रिलेशनशिप थ्रू साइकोलॉजी। मैंने कहा दैट इज व्हाट पीपल रिक्वायर। सो प्रज्ञा इसी तरह की चीज होती नहीं। अब मैं तो अपना तो कुछ पढ़ाया नहीं, अपनी बातें करती रही। अब और नहीं बताऊंगी, नंबर खत्म हो जाएगा, ये चीज मेरी चलती जाएगी। पावर पॉइंट पे आ जाए। हाँ मैम, वी इसके कैन बाद मैम, अभी जैसे बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट इट, सो मेनी काउंसलर्स are there nowadays, but I still remember attending your sessions and there was so much clarity about what counseling means, how it should be done, what are some of the components, what a good counselor should be like, what is the process of counseling, and what is not the process of counseling also. I still remember that. So, ma'am, please talk to us a little bit about that, ma'am, so that the clarity comes to everyone. Yes. yes, and many people think that counseling is advice giving. And you remember our first statement, counseling is not advice giving, it's understanding the person, his assets, his liabilities, or her liability, or her asset, and accepting that. Accepting your own liability is very difficult. So accepting that liability is very important, and then to work on it. And if you have assets, grow them. They have to be grown. Liabilities are to be curbed, but liabilities have to be transformed. तो वहां से फिर काउंसलिंग का शुरू हुआ। बट sometimes I feel very bad that unscrupulous people have started diplomas in counseling, जहाँ काउंसलिंग की सीख नहीं आती उनको। And I sit on various selection committees, जहाँ काउंसलर्स ही सिलेक्ट करती हूँ। अब जो लेटेस्ट जो मैं सिलेक्शन कमेटी में बैठी थी, तो पीएचडी करे हुए लोग आए लेक्चरशिप के लिए, तो हम काउंसलिंग करते हैं, वी डू काउंसलिंग। मैंने कहा हाउ डू यू डू काउंसलिंग, गिव एडवाइस टू पीपल, वी टेल देम व्हाट टू डू। I just looked at her and that this was the first lesson that I gave. It was not advice giving and it was not directing people. मैंने कहा अब उसके बाद बताओ क्या है काउंसलिंग, देखिए फिर बचा क्या काउंसलिंग में। Now that was, I said, I have been telling my students, I said एक association बनाओ जहाँ पे what counseling is important, and people who are unscrupulous exploiting counseling, they should be thrown out. See, but you can ruin a person's life. And पहली चीज है कॉन्फिडेंशियलिटी। अगर आपने उसकी बात सुन के इधर उधर के दोस्तों को सबको बताना शुरू कर दिया, पेरेंट्स को बताना शुरू कर दिया, तो वो तो डूब गई। तो मैंने सबसे पहले सुननी चाहिए कि जो पता चले वो आपके अंदर ही है और किसी और से। अब फिर एम्पैथेटिक में थोड़ी सी एम्पैथी की बात करना चाहती थी, एम्पैथेटिक लिसनिंग करो, put yourself in somebody's shoes and feel for that person. आप फील करते हो तो कभी कभी जब वो आता है आपकी आंखों में भी आंसू आ जाते हैं, because you're associating yourself, you're feeling that pain that you feel. तो इसलिए मतलब हम सोचते कि साइकोलॉजी जो कर रहे हैं और काउंसलिंग अपना को कह रहे हैं, दैट इज रॉन्ग जब तक तुमने काउंसलिंग की स्पेशलाइजेशन ना की। एंड since you attended my classes, you know the difference between a psychologist and a counselor. साइकोलॉजी की बैकग्राउंड जरूर होनी चाहिए। तो फिर मैंने थापर में उन्होंने मुझे कहा कि मैडम आप हमारा एमए साइकोलॉजी करना चाहते हैं, आप बताओ क्या। मैंने कहा ठीक है, बेसिक सब कराएंगे। जब सेकेंड ईयर में वो आए तो वी ब्रेक इनटू टू पार्ट्स, वो क्लिनिकल करेगा। मैंने कहा क्लिनिकल नहीं, क्लिनिकल भी रखो, एक एरिया क्लिनिकल जाए,
एक स्पेशलाइजेशन काउंसलिंग की जाए। फिर मैंने बस सिलेबस सारा नया सब कुछ किया। इट्स अ रोविंग सक्सेस, क्योंकि काउंसलर को अब काउंसलर की ट्रेनिंग मिल रही है। इसी तरह इग्नू के अंदर काउंसलिंग मैंने लेसन भी लिखे थे। एनसीईआरटी के तो जो डिप्लोमा इंटरनेशनल डिप्लोमा था उसको तो मैं शुरू से लेके आखिर तक जुड़ी हुई थी, लेसन भी लिखे, सब कुछ किया। तो मैं सोचती हूँ कि ये चीज ऐसी चीज है कि पीपल विल अनस्क्रूपुलस ऑनेस्टी के साथ जो हो वो करें तो हम फायदा करते हैं, अदरवाइज दे आर चीटिंग। Yes. बहुत कुछ कहने को बस काफी है। It's very difficult to condense so much knowledge, ma'am. But if you were to tell someone who's listening in how the process of counseling should proceed, and what are some of the do's and don'ts for someone who's doing it? लेकिन एप्लीकेशन ऑफ साइंस शुड बी मच मोर इम्पोर्टेंट दैट थियोरेटिकल। थियोरेटिकल करना चाहिए, बेस होनी चाहिए, लेकिन देन एप्लीकेशन पे आना चाहिए। साइकोलॉजी इज फॉर इंडिविजुअल सेल्फ ग्रोथ। Every human being, when he's born, he is without any concepts and cognitive processes. तो हर एक के लिए ये एक होना चाहिए डिसिप्लिन में, स्कूल में, कि अपने बारे में जानो, to know about yourself. And self-actualization, which is a word of Maslow. And these things will give you happiness. What we want people to be happy, but people are not happy. स्कूल में मार रहे हैं, पीट रहे हैं, टीचर को जाके मार रहे हैं, प्रिंसिपल को गोली से मार दिया। दिस इज नॉट डन। हैप्पीनेस आनी चाहिए, डेवलपमेंट आनी चाहिए ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ। आप में अगर क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो आप कोविड जैसी चीज को भी पार लगा जाओगे और लोगों को हेल्प करोगे। एंड ऑल्सो फॉर द वेलफेयर ऑफ द सोसाइटी। आप अच्छे बन गए, अंदर से अच्छे हो गए, सच को बोल रहे हैं, ऑनेस्ट हैं, हैप्पी हैं, डेवलप करना चाहते हैं, तो आप लोगों का भला करने से रह ही नहीं सकते। देन द सोसाइटी इज अ मैनिफेस्टेशन ऑफ इंडिविजुअल। अगर इंडिविजुअल ठीक हो जाएंगे तो सोसाइटी ठीक हो जाएगी, और ये जो झगड़े लड़ाइयां हो रही हैं वो कम हो जाएंगी, नेबरहुड का प्यार हो जाएगा, और चीजें सब होती जाएंगी। Then application of psychology for the welfare of society through the enrichment of person. Person को आप enrich करो, personality develop करो, तो contribution to society में आप ही आ जाएंगे। Then यहाँ पे मैं this is my work जो मैंने किया हुआ है, ये छोटा सा करके दिखा रही हूँ, बड़े पेपर है। Each area carries a lot. Life is a process of adjustment, long process. Every day we are adjusting to new things. तो बर्थ से हमारी एडजस्टमेंट शुरू हो जाती है, रादर प्रीनेटल से। मैं आपको दिखाऊंगी कुछ चीजें, तो प्रीनेटल से शुरू हो जाती है। और यहाँ पे the women who are sitting will listen, and of course Pragya, you are a mother yourself. There have been studies which I discovered about 20-25 years back. उससे पहले ये स्टडी भी नहीं थी, that the prenatal baby also learns, और जो लास्ट 3 मंथ होते हैं, तो ये स्टडी जो हुई इसमें ऐसा हुआ कि उन्होंने माँ को एक कहानी दी, एंड दे सेड नाउ यू रिसाइट दिस स्टोरी, तो ऐसे करके देखो बच्चे को सुनाओ, किंग एंड क्वीन, राजा का एक कहानी थी, एंड लाइक दैट द स्टोरी वेंट ऑन। व्हेन द चाइल्ड वाज बोर्न दे आस्क्ड द फादर टू रिसाइट दैट स्टोरी, नथिंग हैपेंड, बच्चा वैसे ही पड़ा रहा। माँ को और कहानी देगी, परियां थी ये, तो कुछ नहीं हुआ। 2-3 और कहानी दी थी, कुछ नहीं हुआ। बट द मोमेंट दिस सेड या नाउ रिसाइट, एक था राजा एक थी रानी, वो कहानी वाली, एंड द चाइल्ड इमीडिएटली लुक बैक, दैट मीन रिकग्निशन हो रही थी। तो मैंने कहा तुम्हें प्याजे का नाम सुना ना, है ना, प्याजे चाइल्ड डेवलपमेंट के साथ यस मैम, यस मैम। मैंने अपने बच्चों पे एक्सपेरिमेंट किए थे, तो मैंने कहा मैं भी जो मेरा ग्रैंडसन जो विचार का बेटा है ना, ये जब पैदा होने वाला था, तो मैं जाके पास जाके राम राम बेटे, राम राम बेटे, आई फील लाइक दैट। So when he was born, again I did राम राम, you looked like that, आपको पहचानना है तो मैंने कहा he has learned, तो ये राम राम that prove कि हाँ प्रीनेटल लर्निंग। तभी कहते हैं ना, हमारे शास्त्रों में लिखा है गर्भवती औरत को बहुत प्यार से रखना चाहिए, उसको कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए, वो जो खाती है खाने दो, जो पीती है पीने दो, खुश रखो उसको स्ट्रेस नहीं होना चाहिए, कुछ नहीं चाहिए।
And now I find women who take alcohol during that time, smoking, that's lethal absolutely for the baby. तो बर्थ उसके बारे में आगे और भी कहा कुछ कहना चाहते हैं, टाइम नहीं है, थोड़ा सा बता दें. देन बेबीहुड ट्रेनिंग करना सारा कराना, देन ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू द स्कूल. अब बच्चे को स्कूल तो वो भी मैं भी दिखाऊंगी आपको. देन एडोलेसेंट पीरियड, व्हाट डू वी डू अबाउट एडोलेसेंट? Girls have started maturing much earlier. Yes. नॉट आज लड़की मेच्योर हो जाती है. 10 साल की लड़की ने तो बच्चा पैदा कर दिया था रेप के बाद. सो शुड वी गेट सेक्स एजुकेशन विद देम? नथिंग. देन ट्रांजिशन फ्रॉम स्कूल टू प्रोफेशनल कॉलेज. उसके बाद ट्रांजिशन आती है फॉर हायर प्रोफेशनल एजुकेशन. और हायर प्रोफेशनल एजुकेशन वहां क्या होता है? कोई किताबें पढ़ लो, टीचर आपको आएगा चलेगा, छुट्टी कुछ नहीं होता. देन एंटरिंग द वर्ल्ड ऑफ वर्क. पढ़ाई किसी कर रहा हो, नौकरी कर सको. आजकल लड़कियां भी नौकरी करती हैं, लड़के भी नौकरी. हाउ टू प्रिपेयर योरसेल्फ फॉर दैट वर्ल्ड ऑफ वर्क? अगेन साइकोलॉजी कम्स इनटू इट. देन एडजस्टमेंट फॉर जॉब एस्केलेशन. जॉब में आपकी कैसे आप सक्सेसफुल हो, लोगों के साथ टीम बना के चलोगे तो सक्सेसफुल होगे ना. लड़ते रहोगे एक दूसरे से तो टीम नहीं बनेगी. तो कैसे बनाओ, वो सारा साइकोलॉजी. मैंने कराई नहीं चीजें जो कुछ बता रही हूँ. देन as you grow older, retirement नजदीक आ जाती है. So I was the first one in Chandigarh to start 1 week program preparation for retirement. पंजाब है ना, जैसे हिपा है ऐसे पीएसपी है, पंजाब स्टेट बोर्ड गवर्नमेंट का बना हुआ है, ट्रेनिंग फॉर द ऑफिशियल्स. तो इन्होंने वो बुलाए सारे सीनियर. एक उसमें डॉक्टर भी थी. पहले दिन तो शी वाज सो एंग्री. मैं कहा क्या हो गया? मैंने सबको पता चल गया कि मैं मेरी उम्र जो है 59 है, मैं रिटायर होने वाली हूँ. मैंने कहा तो फिर नहीं, मैं चाहती नहीं थी कि मेरी उम्र के बारे में लोगों को पता चले. मैं तो ऐसे आ गई हूँ कि खाना पूरी करती हूँ. मैंने कहा कोई बात नहीं, खाना पूरी करी तो कर ही लो. दूसरे दिन बैठी तो कुछ लगा कि ठीक बातें हो रही है, लेकिन कुछ तो बातें ठीक हो रही है. तीसरे दिन कहती है अब जब आप नेक्स्ट प्रोग्राम कराओगे मैं खुद आऊंगी. इतना अच्छा लगा. हफ्ते के बाद मैंने कहा रिटायरमेंट मीन्स स्ट्रेच फोर्थ योर विंग्स एंड फ्लाई. कोई कैजुअली नहीं लेनी, कोई किसी से परमिशन नहीं लेनी. जो करना चाहते हो करो. जो जिंदगी में सोचते रहे मैं करना चाहता हूँ कर नहीं सकता. और यहाँ पे मैंने जिनकी कराई उनमें से एक बहुत हाई लेवल का इंडस्ट्री में मैनेजिंग डायरेक्टर था, सीईओ था. कहता है आपने मेरी आंखें खोली. मैं सारी उम्र मुझे म्यूजिक का बड़ा शौक था, मैं सितार बजाना चाहता था. तो मैंने कहा अब क्यों नहीं बता सकते, बजाओ. एक तो कप लेसन एक गुरुजी ढूंढे. 6 महीने में सितार ऐसे बजा रहे थे वो. मैंने कहा टेगोर थिएटर में कर दो भाई अपना प्रोग्राम. कहते ना अब मैं अपने लिए जाता, आई एंजॉय माय सेल्फ. टेगोर थिएटर में क्यों था? यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? आफ्टर दैट एजिंग इज देयर. आजकल लोग 100 साल की उम्र तक जी रहे हैं. एजिंग इज नॉट अ वेरी इजी प्रोसेस. दांत आएंगे, आंखें नहीं काम करेंगी, कान से सुनाई नहीं देगा, चल नहीं सकोगे. अब बच्चे भारी बार रखते हैं, वो आपके पास बैठ के आपकी बातें नहीं सुन सकते, आपकी चीजें नहीं सुन सकते. तो यू गो इनटू डिप्रेशन. लॉट्स ऑफ एडल्ट्स, आई मीन ओल्ड एज पीपल आर गोइंग टू. अब ये तो है नहीं कि भी आपने कहा कि अच्छा भाई डेथ प्लीज आ जा, मैं तो जाना चाहता हूँ, ये जाना चाहती हूँ. नहीं, डेथ विल कम ना, डेथ विल कम. So preparing yourself for that. Then that's anxiety. क्या होगा मेरे साथ? ओके. तो ये सारी चीजें जो है ये साइकोलॉजी का बैकग्राउंड होती है. अब ये देखिए, मैंने कहा कुछ हंसी की चीज भी दिखा दीजिए ना. ये देखिए बच्चे के बाद क्या हुआ? चाइल्ड. छोटे छोटे चिल्ड्रन हो गए, दोस्तियां होगी, ये होगी, सब कुछ हो रहा. टॉडलर है, बेबी है, प्रेगनेंसी से शुरू होना. प्रेगनेंट, बेबी, टॉडलर, छोटे बच्चे, माँ बाप और बच्चे, भाई बहन सब. फिर अडल्ट बन गए आप. अडल्ट बन के आप ओल्ड एज में आ गए तो एक पूरी साइकिल आपकी खत्म हो गई. और हर फेज पे आपको साइकोलॉजी चाहिए अगर आप अच्छी जिंदगी जीना चाहते हो. इफ यू वांट टू बी हैप्पी पर्सन, वेरी एडजस्टेड पर्सन. अब ये क्या हो रहा है? पैदा होने के बाद दौड़ी दौड़ लगी रहती है. जल्दी जल्दी दौड़ो, जल्दी जल्दी दौड़ो, सब कुछ जल्दी जल्दी कर लो. और कहाँ पहुंचते हो? व्हील चेयर. व्हील चेयर किसके लिए होती है? के लिए. और बूढ़ा जब ऊपर चला जाता है तो क्या बनता है? दिखी थी ना अमिताभ बच्चन वाली कहानी, घोस्ट वाली. और लगाते लगाते कहाँ पहुंच रहे हैं. उसके जगह
खुशी खुशी जिए, अच्छी तरह जिए तो अच्छा होगा। अब ये देखिए बर्थ, इसमें कुछ बड़े हाई पॉइंट जान सकती हूँ आपको। द बर्थ ट्रॉमा इज एक्सपीरियंस नॉट ओनली बाय द मदर बट बाय द चाइल्ड ऑल्सो। हम कहते हैं माँ को बड़ी तकलीफ, माँ को बड़ी दर्द, मेरे बच्चे को आपको समझ पड़ी कितनी तकलीफ हुई। और यहाँ पे मैंने स्टडी की है, mothers who have just 2 hours labor pain and the child is born, बच्चा खुश रहता है, रोता उठा नहीं है। But I have known of a mother who had 74 hours of labor pain. 74 hours, you can imagine, Pragya. अब का जो बच्चा पैदा हुआ, फांसों से खींच के निकाला गया, he couldn't take milk properly, तलवी से बैठ के उसको दूध पिलाते थे। That child developed ADHD. वो सारी चीजें हैं देखिए, ये बच्चे को भी तो तकलीफ हो रही है ना। And not only this, how you receive the child. Parents and the family have 3 attitudes. एक तो है लड़की होगी तो रिजेक्शन, लड़की आ गई। एक है एक्सेप्टेड, क्या था, खुशी, बहुत ज्यादा खुशी इस चीज को ना, इसको आप कहते हैं कि टू मच ऑफ यूफोरिया, बहुत खुश है, लड़का हो गया बहुत खुश है, रिजल्ट बनाओ, लड्डू जलाओ, ये करो। और बच्चे को क्या हो रहा है, ये आप देख रहे हैं। और तीसरी चीज है जो साइकोलॉजी हम सीखते हैं, एक्सेप्टेंस। चाहे लड़की है, चाहे लड़का है, चाहे डिसेबिलिटी के साथ है, इट्स योर बेबी, यू हैव क्रिएटेड इट, तो एक्सेप्ट बेबी। बच्चे की नींव अब अगर पड़ गई तो आगे चल के वो ठीक कैसे होगा। अब फिर आप देखिए अर्ली डिसिप्लिन, toilet training is to be done, weaning is to be done, little discipline is to be done, child is to be taught कि किसी बड़े को जाकर थप्पड़ ना मारो। मारते ना बच्चे, थप्पड़ मार देता बच्चे, बड़े हाँ करने लगे, उनका पागल हो, अभी छोटा को मारा पर अभी बड़े होकर चाकू मारेगा, ऐसे बात है। मैंने कहा हाँ, अब जब थप्पड़ मारा तो एक लगाओ, लगाओ नहीं, मुंह से समझाओ। तो कहते हैं फिर लगाए बिना मुंह से कैसे समझेगा। मैंने मैं करके दिखाती, मैंने कहा बेटे आपने अपनी माँ को ऐसे थप्पड़ मारा, उसको दर्द हुई? हाँ। मैंने कहा अब वो तुमको मारे, तुमको दर्द हुई? हाँ ये तो होगा। मैंने कहा क्या करोगे, माँ को प्यार करते हो? हाँ बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कहा तो जाके जिस पे थप्पड़ मारा ना वहाँ किसी करके आओ। क्या किसी करके आया? आपने तो कमाल करके अपने जादूगर हो। मैंने कहा हाँ ऐसे ही जादूगर हूँ, साइकोलॉजी है मेरे पास। तो ये मैं आपको बता दूं कि पेरेंटिंग में राइट वे ऑफ टॉयलेट ट्रेनिंग, राइट वे ऑफ डिसिप्लिन, राइट वे ऑफ वीनिंग, ये नहीं कि एक दिन जाके वो तेरी बॉटल तो गोवा ले गया तो कल वो रो रहा मेरी बॉटल आ गई। अच्छे कप में पिलाओ, अच्छी चीज, ग्रेजुअल ट्रांजिशन करो, कर लेगा। एंड सिमिलरली फॉर एवरीथिंग, टॉयलेट ट्रेनिंग में देने के करता तो करने भी था करता, टेम्पर बन के करता तो 5 साल तक करता नहीं, उसके आवर्स होते हैं, उसके टाइम होता है, इतनी देर में करता है, इतनी देर में करता है, उसके साथ आपको कंडीशनिंग, तो क्या याद है कंडीशनिंग, कंडीशनिंग करनी। यू हैव टू कंडीशन योरसेल्फ टू लर्न कि ये बच्चा 40 मिनट्स पे वेट कर रहा है अपना मैगी, तो आप उसका 35 मिनट पे पास पे बिठाओगे। और वो होता था ना पहले कहते ऐसे करते थे, तो टैबलेट ने क्या किया था, वो घंटी बजाई थी, याद है आप लोग कैसे सारे में? बिल्कुल। तो उसको कंडीशनिंग हो गई थी उससे, इस तरह बच्चे को कंडीशनिंग हो जाती है, तो आप जब बैठाओगे वो कर लेगा, नाइट भी क्लीन रहेगा। मैंने अपनी 21 दिन की बेटी को टॉयलेट ट्रेन करा दिया था। एंड ऑल पार्ट ऑफ दिस डेवलपिंग इन साइकोलॉजी, डेवलपमेंटल साइकोलॉजी, हर लोग उठाओ चीजें आएंगी वहां पे। अब आगे है कि इसके साथ चाइल्डहुड इश्यूज बड़े सारे होते हैं which we neglect and we are not even bothered about this. सबसे पहले ये कि जेनेटिक काउंसलिंग, बिफोर यू हैव अ चाइल्ड डू जेनेटिक काउंसलिंग। कई होता है कि आप भी वो ए नेगेटिव हो और दूसरा ए पॉजिटिव है, तो दोनों का ये क्लास होता है, बच्चे को नहीं ठीक करता। ठीक है, और कोई आपके अंदर कोई डिजीज है जो कंजेनिटल है, so you have to see to it that your child doesn't get that sort of congenital disease, genetic counseling. Before socialization process, adopting healthy child raising practices. उनको समझो और फिर करो। यहाँ पे if you remember वो करते थे ना trust versus mistrust पहले, वहां से शुरू करो, बच्चे पे विश्वास करना शुरू करो, बच्चे को काम सिखाना धीरे धीरे शुरू करो, शेयरिंग करना सिखाओ। And learn, teach the child to be able to help others also.
And then educating people who are looking after the child. Uh, Both the husband and wife are working, they leave the child in a creche. Are the creche people trained? Issues में disability, बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी है. मैं डिसेबिलिटी पे काफी काम करती हूँ. अभी the keynote address सब इसी पे था, disability and education पे. तो childhood disorders can be of many types. Yes. Dyslexia, आपने पैराजनी पे देखी होगी, dyslexia, autism. Again, I was the pioneer in Chandigarh to start a school for autistic children in Prayas. वो इंडियन काउंसिल का बिल्डिंग थी, प्रयास. वहां मैंने ये शुरू किया. मैं 2 अपनी स्टूडेंट को साइकोलॉजी की लेके आई, उनको मैंने दिल्ली भेज के ट्रेनिंग कराई ऑटिस्ट की बच्चों को ट्रीटमेंट, और वो फिर ऑटिज्म का स्कूल खोला. अब पेरेंट्स इतने खुश हैं कि वो इतने नॉर्मलाइज रहते हैं कि दे गो टू अ नॉर्मल स्कूल, क्योंकि दिमाग ठीक है उनका, लेकिन इमोशनली दे आर ब्लैंक. तो वो चीजें चैलेंजेस हैं बहुत सारे, उनको डील करना है. देन हैंडीकैप्स, ब्लाइंड है, डेफ है, डम है, ऑर्थोपेडिकली है, चैलेंज है. नीचे एक छोटी सी वो पिक्चर आपको दिखा रहे हैं, तो ये सब चीजें बच्चों के साथ होती हैं. तो सबसे पहले पेरेंट्स की काउंसलिंग है, एक्सेप्ट योर चाइल्ड इवन विद डिफिडेंस और डिफिकल्टी और whatever it is, you have to accept the child. Turn the disability into ability. और ये मैंने वहां पे प्रयास में 3 दिसंबर को डिसेबल्ड डे होता था, बच्चों की करा के दिखा दी है पेरेंट को, देखो आपके बच्चे चीजें मना रहे हैं, हीरो सेल पे लगी हुई है, पैसे कमा के ला रहे हैं. देन ट्रांजिशन फ्रॉम होम टू स्कूल. भाई बच्चे को आप कैसे एकदम सारा पढ़ने की सब जल्दी से बता रही हूँ आपको. मैंने इसके ऊपर भी थोड़ी सी ऑब्जर्वेशन स्टडी की है. And 90% of the children are howling their heart out when they go for their pre-nursery or nursery, जो भी क्लास में आप डालते हो उनकी. And what the parents are doing, बच्चे को छोड़ा और चले गए अपने. अब बच्चा कह रहा है माँ माँ पापा उड़कर रो रहा है. Nothing. I said to the parents should be trained to make the child prepared, make the child acceptant and prepared the child to go to your school. तो मैंने उससे पूछा, कुछ पेरेंट्स की इंटरव्यू करी कि आप बच्चे को कैसे तैयारी करते हैं. तैयारी इतना शराना है, स्कूल जाएगा ठीक हो जाएगा, सीधा पार हो जाएगा. मैंने कहा यार जेल भेज रहे हो बच्चे को तो स्कूल भेज रहे हो. हाँ, मैंने बिल्कुल ये नहीं करोगे. आप कहोगे स्कूल में अच्छी जगह है, पहले ले जाके स्कूल के फील्ड वगैरह दिखाओ, झूले लगे हैं वो दिखाओ, आप दिखाओ कि भाई अच्छी चीजें हो रही है स्कूल में, इंजॉयबल चीजें हो रही हैं. आज की युग में जब सैटरडे आता है पीपल आर वेरी हैप्पी, छुट्टी होने वाली है. जब मंडे सुबह आता है सबके मुंह से लटके हुए होते हैं, तो मंडे प्लीज आर यू गोइंग टू वर्क फॉर अनहैप्पीनेस और हैप्पीनेस, बट द रेजिड्यू ऑफ द स्कूल कैरीज विथ यू. Then we don't wish to traumatize the child. This transition has to be gentle and gradual. और ये चीज होता ही नहीं है हमारे साथ. So thank you so much, ma'am, for sharing so much from your own experience. And I'm sure for everyone who has been listening in, this must have been a very enlightening session. There are so many small tips that you have shared. And मुझे लगता है कि for students, for teachers, for parents, I think for just about everyone, there is so much to learn from psychology. And when it comes from a teacher like you, there's no full stop. We could just go on. But because of limitation of time, we'll conclude this samvad. Thank you so much, ma'am, for being here. It was a great pleasure talking to you. And thank you for sharing. क्या और ऐसी चीजें करो, बहुत अच्छी चीज है. Thank you, ma'am.